Good morning. Today we will deal with reaction mechanism in which we will discuss about electrophilic substitution reaction. प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक प्रतिस्थापी का दूसरे प्रतिस्थापी द्वारा विस्थापन, that is displacement of one substituent by another is known as substitution reaction. Basically, substitution reaction is of three types: nucleophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction, and free radical substitution reaction. Today, we will discuss about electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? When atom or group of atom is substituted by an electrophile, these type of reactions are known as electrophilic substitution reaction. ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए उसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. उदाहरण के तौर पर बेंजीन पर जब ब्रोमोनियम आयन का अटैक होगा तो ब्रोमोबेंजीन और प्रोटॉन बनेगा. यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन ने बेंजीन के हाइड्रोजन एटम को प्रतिस्थापित कर दिया है और यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है. इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन और उस एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं. That is, aromatic compound shows electrophilic substitution reaction because due to resonance, aromatic compounds are pi electron rich, and the attack of electron deficient species, that is electrophile, on aromatic ring takes place and forms a substituted product. So aromatic compound shows electrophilic substitution reaction. This is general mechanism of electrophilic substitution reaction. When an electrophile attacks on a benzene ring, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स या आर्नियम आयन या विलेंड मध्यवर्ती बनाता है और विलेंड मध्यवर्ती प्रोटॉन त्याग कर प्रतिस्थापित उत्पाद बनाएगा. When an electrophile attack on a benzene ring, it forms arenium ion which loses a proton and form a substituted product. Here E plus is electrophile and the rate of reaction depends on the concentration of benzene and electrophile, and order of reaction is 2. Now, what is halogenation of benzene? When hydrogen atom of a benzene ring is substituted by halogen, it forms halobenzene. This is known as halogenation. Here AlCl3 acts as a halogen carrier. In step 1, generation of electrophile takes place, that is AlCl3 halogen carrier react with chlorine molecule to form chloronium ion and AlCl4 minus. In step 2, this halonium ion attacks on a benzene ring to form valent intermediate, which on loss of proton it forms substituted product, that is chlorobenzene. बेंजीन पर हेलोनियम आयन आक्रमण करके एरिनियम आयन या वेलेंट मध्यवर्ती बनाता है जो कि प्रोटॉन का त्याग करके प्रतिस्थापित उत्पाद बनाएगा. और स्टेप 3 में H प्लस AlCl4 माइनस के साथ क्रिया करके AlCl3 और HCl बनाएगा. Chlorination and bromination is easily done by this process, but iodination and fluorination
proceed via special method. In iodination, benzene react with iodine in presence of oxidizing reagent HNO3 to form iodobenzene. Now, nitration of benzene. Replacement of hydrogen atom of benzene by nitro group is known as nitration of benzene. Nitration is done in presence of nitrating mixture, that is mixture of concentrated HNO3 and H2SO4. H2SO4 and HNO3 reacts to form nitronium ion, HSO4 minus and hydronium ion. This nitronium ion attacks on an benzene ring to form sigma complex or valent intermediate, which loses a proton and form substituted product nitrobenzene. In step third, H plus react with HSO4 minus leads to the formation of H2SO4. If nitration is done by dilute HNO3, then first nitrosation and then nitroso compound on oxidation is converted into nitro compounds. Third example is sulfonation of benzene. Benzene on reaction with concentrated sulfuric acid or chlorosulfonic acid, then one hydrogen atom of the benzene ring is replaced by sulfonic acid group to form benzene sulfonic acid. This is known as sulfonation. In this reaction, the step 1 H2SO4 on dissociation form H2 and sulfur trioxide. This sulfur trioxide acts as a electrophile, and due to resonating structure of SO3, sulfur atom is electron deficient, and this SO3 attacks on an benzene ring to form valent intermediate, which on loss of proton forms benzene sulfonate ion, which rearranges to form the substituted benzene sulfonic acid. Next is Friedel-Crafts alkylation. जब किसी एरोमेटिक यौगिक की लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एरोमेटिक यौगिक का एल्किलीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। That is, benzene when react with alkyl halide in presence of Lewis acid AlCl3, it forms alkyl benzene. This is known as alkylation. It is also known as Friedel-Crafts alkylation. उपर्युक्त अभिक्रिया की गतिज समीकरण निम्न प्रकार की होती है। That is, rate equation of the above reaction is as follows. Rate is equal to K, concentration of aromatic compound, that is benzene, concentration of alkyl halide, and concentration of Lewis acid AlX3. अर्थात अभिक्रिया की गति एरोमेटिक यौगिक और एल्किल हैलाइड के अतिरिक्त लुईस अम्ल की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। अतः इसकी क्रियाविधि में भी लुईस अम्ल की सहायता से इलेक्ट्रोफाइल का बनना एक मंद एवं वेग निर्धारण पद द्वारा संपन्न होना चाहिए। अतः इसकी क्रियाविधि को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। That is, this Lewis acid react with alkyl halide to form electrophile, and this electrophile attacks on an benzene ring. It forms valent intermediate which loses proton to form the substituted product. And the mechanism of this reaction is as follows.
alkyl halide react with AlX3, slow step forms alkyl carbonium ion and AlCl4 minus. इस प्रकार बना कार्बोकेटाइन, दिस इज एल्काइल कार्बोकेटाइन, एरोमेटिक वलय पर इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण करके वेलेंट मध्यवर्ती बनाता है जो प्रोटॉन त्याग कर प्रतिस्थापन उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है. दैट इज एल्काइल कार्बोकेटाइन अटैक ऑन एन बेंजीन रिंग टू फॉर्म वेलेंट इंटरमीडिएट which loses proton and form alkyl benzene. इस प्रकार एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है. बेंजीन से टालोइन बनाने के लिए बेंजीन की AlCl3 की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है. दैट इज बेंजीन when react with methyl chloride in presence of AlCl3 it forms toluene. Here the hydrogen atom of the benzene ring is being replaced by alkyl group. This is known as alkylation of benzene, or we can say Friedel-Crafts alkylation. Now, Friedel-Crafts acylation. जब किसी एरोमेटिक यौगिक की लुईस अम्ल की उपस्थिति में एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं. दैट इज व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड in presence of AlCl3 it forms aromatic ketones and this reaction is known as Friedel-Crafts acylation. इस अभिक्रिया को वेग समीकरण निम्न प्रकार से होती है. That is rate equation of the following reaction is as follows. Rate is equal to concentration of benzene, concentration of acyl halide and concentration of AlCl3. अर्थात इसकी क्रिया विधि भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की भांति होती है जिसमें मंद व वेग निर्धारण पद के द्वारा एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो पुनः एक मंद एवं वेग निर्धारण पद के द्वारा बेंजीन अथवा एरोमेटिक यौगिक पर इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण करके वेलेंट मध्यवर्ती बनाता है जो एक प्रोटॉन को त्याग कर प्रतिस्थापन उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है. That is, Lewis acid react with acyl halide to generate an electrophile and this is rate determining step and this electrophile attacks on a benzene ring to form valent intermediate which loses a proton and form the substituted product as aromatic ketones. The mechanism is as follows. This acyl halide react with AlCl3. It forms acyl carbonium ion and AlCl4 minus. When acyl carbonium ion attacks on a benzene ring, it forms valent intermediate which loses proton and form aromatic ketones. उदाहरण के लिए यदि बेंजीन की AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनाइड्राइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो एसिटोफिनोल बनता है. दैट इज व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनाइड्राइड in presence of AlCl3 it forms acetophenol and HCl. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation. Here the hydrogen atom of benzene ring is being replaced by acyl group. That's why it is known as Friedel-Crafts acylation. This is all about electrophilic substitution reaction and mechanism of electrophilic substitution reaction. Thank you.